Can you both see me writing on the screen? जी. So students, सबसे पहले we have natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers, we also say natural numbers as n. So natural numbers are basically also called counting numbers, right? And natural numbers starts from 1, 2, 3, 4. So all of these are natural numbers. They are also called counting numbers, and they make up one set of numbers, which is starting from 1, 2, 3, 4 to the infinity. So it means natural numbers do not include 0. 0 is not included in the natural numbers. Negative numbers are not included in the natural numbers. Natural numbers are only the counting numbers. They start from 1, 2, 3, 4 and carry on. Okay. So the next set of numbers we have is whole numbers. Whole numbers is another set of numbers. Whole numbers is represented by W. Whole number is a set of numbers that is the counting numbers. It is also counting numbers, but the addition is with 0. There are counting numbers with 0. So whole numbers are counting numbers with 0. So we can say that whole numbers are 0, 1, 2, 3, carry on. So you can see that still the negative numbers are not included in the whole numbers. Whole numbers are counting numbers starting from 0, 1, 2, 3, 4, and all those numbers. So natural numbers are the counting numbers starting from 1. Whole numbers are the counting numbers starting from 0. And these are the two set of numbers. Natural numbers are denoted by n. Whole numbers are, we call whole numbers as w. Okay. Next set of numbers. The next set of numbers we have is a very big set of numbers, and it is very common set of numbers. It is called integers denoted by z. So now integers. What are the integers? Integers contain counting numbers. Integers contain counting numbers, their opposites, and 0. So what is the meaning of their opposites? Means negative numbers are also included. It means 0, 1. If 1 is included, then minus 1 is included. If 2 is included, then minus 2 is included. If 3 is included, then minus 3 is included, and carry on. So the next set of numbers is called integers that include counting numbers, their opposites, 0, and these are called integers. So students, we have discussed three set of numbers. One is natural numbers. It contain only counting numbers from 1 to onwards. Whole numbers which contain 0, 1 and onwards. Integers which contains 0, positive and negative, all the numbers. The next set of numbers we have is a big set of numbers called rational numbers. So what are natural numbers? It is Q. Q is denoted as rational numbers. So any number that can be written as a fraction. Okay. Any number that can be written as fraction is called rational number or Q. It includes all the repeating decimals. It includes repeating decimals, and it also includes the decimals that terminate. So all of these numbers are included in one set of numbers, and that set of numbers is called rational numbers. Okay. So we have another set of numbers.
Another set of numbers is called irrational numbers. Okay, irrational numbers means q dash, and it is a real number that is not rational. Also, in the irrational number, decimals does not terminate or repeat. Decimal does not terminate or repeat. Okay. So the last set of numbers that we are going to study today, and the big set of numbers, is called the real numbers. Real numbers is a big set of numbers that occupy all of these numbers. So this is the set of rational numbers, set of rational and irrational. So students, you can see how beautifully we have learned all of the set of numbers. So set of numbers starting from the natural numbers that are only counting numbers that contain 1, 2, 3, 4, etc. Then whole numbers which contain counting numbers and zero. Then integers which contain counting numbers plus positive and negative all the numbers. Rational numbers contain the fraction numbers, repeating and the terminating numbers. Irrational numbers does not contain the repeating and the terminal numbers. And all of these numbers combined together in one big set of numbers that is called real numbers. So real numbers have basically, you can see the branches starting from naturals and wholes and integers and real. So rationals and real numbers basically is the combination of two big set of numbers, that is rational numbers and irrational numbers. And all other set of numbers comes in the rational numbers. So we can say in this way we can write. Can we write that real numbers is a big set of numbers and that is containing rational and irrational, right? Real numbers set is a big set of numbers that contain rational numbers and irrational numbers. So what are the rational numbers? Rational numbers are the numbers that can be converted into decimals, negative decimals, positive decimals, fractions, whole numbers, like this. And what are irrational numbers that cannot be converted, like pi is an irrational number, like square root 7 is an irrational number, like cube root of 5 is an irrational number. So these are the irrational numbers. Now there are types of decimals. Today we are going to study types of decimals. Okay. So what are the types of decimals? In types of decimals, first of all, we have terminating decimals. What are terminating decimals? The digits after the decimal point terminate. The word terminate means finish, means ends. The terminate means finish or ends. So what is the meaning of terminating decimals? The digits after decimal point terminate. So this is called terminating decimal. Then we have recurring decimals. So what are recurring decimals? Digits after decimal point
repeats themselves indefinitely. So it means we have terminating decimals which terminate, in which the digits terminate. For example, of terminating decimals can be like 2, like minus 0.7, 9/4. So the decimals terminate means decimals finish. But if we have recurring decimals, then recurring decimals is like 1/3. The answer will be 0.3333, which carries on and never stops. Then we have 22/7, which the decimal carries on, never stop. So such decimals are called recurring decimals. Then we have non-recurring, non-terminating decimals. Because it is very difficult to attend a call. Hello, are you there now? Hello. जी मैं आ गया हूँ। Yes. Okay. Okay. So next type of decimal is non-recurring, non-terminating decimal. So what is non-recurring and non-terminating decimal? The decimals of the type in which the numbers after the decimals don't even terminate and don't even recur. For example, we have 1 by square root 2. So what is the answer for 1 over square root 2 if you convert it in the decimal? Can you people convert 1 over square root 2 in the decimals? You may get something like this 0.70710678 and carry on. So you can see कि numbers ना तो repeat हो रहे हैं और ना ही finish हो रहे हैं. ना repeat हो रहे हैं मतलब non recurring है, ना ही finish हो रहे हैं मतलब non terminating है. So ऐसे numbers जो कि repeat भी नहीं होते हैं and they not even terminate, don't even finish, such numbers are called non recurring, non terminating decimals. So we have three types of decimals. Number one type is terminating decimals. Number two type is recurring decimals, and number three type is non-recurring, non-terminating decimals. Terminating decimals are those which terminate or finish, means 2 minus 0.79/4. Recurring decimals is के same number after decimal के बाद same number keeps on repeating. Such a decimal is called recurring decimal. If you have now non-recurring, non-terminating decimal is such a number जो कि ना तो repeat है और ना ही terminate है. Such decimals are called non-recurring, non-terminating decimals. Okay, so we have a number line folder then, and we can say that we can represent all the numbers on the number line. So what is the number line? Number line is something like this. We have 0 in the center, and on the right side of the 0, we have positive numbers. It goes to positive infinity. On the left side of the number line, we have negative numbers. It goes to negative infinity. So these are called representation. We can represent any number on the number line.
using this sense of numbers. Okay. For example, I have the number minus 3 by 2. So I can represent it on the number line where minus 3 by 2 is somewhere between minus 1 and minus 2. So this is minus 3 by 2. I can represent 0.2 on the number line. 0.2 would be somewhere over here. It would be 0.2. I can represent pi on the number line with what is pi? 3.14. So 3.14 will be something over here. So it would be pi. So I can represent any number on the number line. Okay, now I'm coming to the next point. I'm going to give you 10 minutes, 5 to 10 minutes to just understand some properties of real numbers. Because today we are going to study everything about real numbers. So properties of real numbers are something you just need to understand. There is nothing to learn or there is nothing to like grasp. Okay, it's just need to understand it what is happening in the real number. So real number has one property called Fourier property. What is the meaning of Fourier property? You just need to understand these things. So the meaning of Fourier property is real numbers are closed under addition, subtraction, and real numbers are closed under addition, subtraction, and multiplication. What is the meaning of closed under addition, subtraction, multiplication means? If you take any two real numbers, for example, you have taken 2 and 4. When you add them, addition, when you add them, 2 plus 4, what did you get? 6. What is 6? Is it a real number? Yes, it is a real number. If you take two real numbers, 2 and 4, if you subtract them, what you will get? Minus 2. What is minus 2? Is it a real number? Yes, it is a real number. If you take two real numbers, 2 multiplied by 4, what did you get? 8. What is 8? 8 is a real number? Yes, it is a real number. So closed means कि अगर आप कोई भी दुनिया के दो रियल नंबर्स में इफ यू ऐड देम तो जो उनका आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर। अगर आप दुनिया के कोई भी दो रियल नंबर्स में इफ यू सब्ट्रैक्ट देम जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। अगर आप कोई भी दुनिया के दो रियल नंबर्स में इफ यू मल्टीप्लाई देम जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब है रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आप दुनिया के कोई दो रियल नंबर ले लिए उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर जो कि एक रियल नंबर ही हो। सो दिस इज कॉल्ड फ्लोयर प्रॉपर्टी। इसको याद नहीं करना, फिर समझना है, पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो रियल नंबर ही होता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property, what is? Multiplication and addition of two real numbers follow the commutative property. Commutative property को क्या मतलब होता है कि अगर आप 2 plus 4 करें या 4 plus 2 करें तो you will get the same answer. 6 is equal to 6. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी दो नंबर्स को जिस तरह मर्जी ऐड कर लो आंसर सेम आता है। नाउ रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन follows commutative property. ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, इस बात का मतलब क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करिए मतलब कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम आंसर। फॉर एग्जांपल, आप -2 को प्लस कर दो 4 में या 4 को माइनस कर दो 2 से, तो आपको क्या आंसर में? -2 + 4 इज 2, 4 - 2 इज 2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉलो हो रही है कि एडिशन में हम कोई भी दो नंबर्स को जैसे मर्जी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट द सेम आंसर। अब -2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से या 4 को मल्टीप्लाई कर दो -2 से, बोथ ऑफ द टाइम आपको -8 मिलेगा। तो आपने देखा कि आप एडिशन में कुछ भी आगे पीछे कर लो, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आगे पीछे कर लो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो उसमें आप पहले ए लिख लो या पहले बी लिख लो। ए और बी मतलब कोई भी दो रियल नंबर ले लो।
तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको आंसर सेम मिलेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपने पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों मैं फिर कह रही हूँ, आपको ये प्रॉपर्टीज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में अगर आपके पास 4 into 2 आ रहा है या 2 into 4 आ रहा है, वन इन द सेम थिंग। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम जनरली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे ए बी और सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, और ये भी प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में फॉलो होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चों इस दफा आपने 2 नंबर्स नहीं लेने, इस दफा आपने 3 नंबर्स ले लेने। लेट्स सपोज आपने ले लिया 2, 4 और 6 ले लिया, ठीक है। अब आप इसको देखो, आपने पहले लिखा 2+4+6 लिख लो, या फिर आपको पता है ना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, या फिर आप पहले 2+4 कर लो फिर 6 कर लो। तो बच्चों क्या बनेगा? 2+4+6 क्या होता है? 10, 10+2 क्या होता है? 12। यहाँ पे पहले आप 4+2 सॉल्व करोगे, 4+2 क्या होता है? 6, 6+6 क्या होता है? 12। तो आपने देखा कि अगर आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर हैं, आप उनको जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह अगर आपके पास यही 3 रियल नंबर्स हों और आप इनको मल्टीप्लाई करो डिफरेंट ऑर्डर में, 4 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6, तो क्या होगा? 2 टाइम्स 6 टाइम्स 4 क्या होता है? 24। 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8 into 6, 8 6 क्या होता है? 48। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है दुनिया के जो से मर्जी 3 रियल नंबर्स ले लो, उनको आप जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। जिस मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। बच्चों ये चीज ओके हो गई आप दोनों के लिए? यस। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आलिया, कैन यू अंडरस्टैंड? आ रही है। यस। आलिया, प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज का जो थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो इट इज ऑल अबाउट कि मैं आपको समझा रही हूँ, तो होपफुली आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी विच शुड बी इक्वल टू, ए को हम पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें पता है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते हैं हम जब भी 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर बी माइनस सी आ गया तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रियल नंबर्स में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी को चेंज ना होने दे, ठीक है। तो नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, बच्चों दुनिया का कोई भी जीरो नंबर, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें 0 ऐड करो तो क्या वो नंबर चेंज होता है? नो। 1000 में 0 ऐड कर दो, 1000 रहेगा। 1/4 में 0 ऐड कर दो, 1/4 रहेगा। तो बच्चों 0 एक ऐसी आइडेंटिटी है जो दुनिया के किसी भी नंबर में ऐड करने से वो नंबर चेंज नहीं होता। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों है एडिटिव आइडेंटिटी? क्योंकि इसको दुनिया के किसी भी नंबर में ऐड कर लो तो ये उस नंबर को चेंज नहीं होने देता। इसी तरह बच्चों 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाई इज 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्योंकि 1 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो वो उसको चेंज नहीं होने देता। पता है ना आपको कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर वापस आ जाता है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए वो चेंज नहीं होने देता, देयरफॉर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऑल ओके हो गया यहाँ तक? ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आप लोगों को इसलिए सिखा दी है, बता दी है, ताकि आपके माइंड में चीजें हो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू
हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज समथिंग कि जब भी हम किसी के ऊपर एब्सोल्यूट यानी कि ये जो दो ब्रैकेट दो ऐसे करके हम सिंबल्स लगाते हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव होती हैं चीजें वो खत्म हो जाती हैं, एवरीथिंग बिकम्स पॉजिटिव। दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमारी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें थी that we have learned, that we have understood. अभी we are not have started the questions, so we are going to start the questions. Before questions, you can ask me any question जो अभी तक you have understood. Understood. No question. If you have any question, you can just ask me right now. Do you have any question? No. Everything is clear up till now? Everything is clear, बच्चों दोनों? Alia, Yes. is everything clear? Okay. Now we are starting square root. So you know कि आप लोगों ने D1 में भी square root किए थे। अभी we are also doing the D1. आपको पता है हमारा साइड बाय साइड एक ग्रुप चल रहा है D1 मैथ्स का। So उसमें we have completed chapter number 1 और उसका इंशाल्लाह परसों टेस्ट होगा। तो अगर आप लोग D1 रिवाइज करना चाहो तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे स्क्वायर रूट्स को हम लोगों ने जब पढ़ा था अपने D1 में, तो हमने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, रिमेंबर? एंड विद द प्राइम फैक्टराइजेशन हम हाउ डिड वी डू द स्क्वायर रूट? हमें पता था that if we have a big number like 3 8। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर टाइम जो है वो रन आउट हो जाएगा तो यू नीड टू ज्वाइन विद द सेम लिंक, ओके? 3 8 9 3 7। बच्चों अगर जूम मीटिंग बंद हो जाए तो यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, ओके? तो बच्चों ये Yes. मैं आपको जो स्क्वायर रूट लेना सिखा रही हूँ, ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने D1 में स्क्वायर रूट कैसे सीखा था। तो वी लर्न इन D1 में हमने स्क्वायर रूट सीखा था, जो कि अभी हमने D1 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द अपडेटेड वेरिएंट्स। तो D1 में क्या होता था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। 2 टाइम्स 1 इज 2, 9 इज 18, 4 is 8, 6 is 12, 8 is 16, 8 is 16। अच्छा आई होप अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ आ रही होगी। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन स्टॉप मी। 2 टाइम्स 9 is 18, 7 is 14, 3 is 6, 4 is 8, 4 is 8। 2 times 4 is 8, 8 is 16, 17, 2 is 6 is 12, 7 is 14, 2 is 4। 2 times 2 is 4, 4 is 8, 3 is 6, 2 times 3 is 6, 6 is 12। 2 times 1 is 2, 2 is 4, 1 is 2, 6 is 12, 8 is 16। 2 times 6 is 12, 0, 8 is 16, 4 is 8। 2 times 3 is 6, 0, 4 is 8, 2 is 4। 2 times 1 is 2, 5 is 10, 2 is 4, 1 is 2. Okay. 3 times 5 is 15, 0, 7 is 21। 3 times 1 is 3, 6 is 18, 9 is 27। 169. Which table? I think 13. Yes, 13 times 1 is 13, 14, 15, 16, 3, 39, 3 is 39। 13 times 1। अच्छा तो हम लोग इस तरह हम लोगों ने रिमेम्बर D1 में सीखा था। फिर हम क्या करते थे, जब हम लोग ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन we have find out, then we just need to write it like this: 3 8 9 3 7 6। So what are the prime factors that we find out? Now we have to write all of the prime factors in the form of pairs. So 1 2 3 4, 2 के हमारे पास 4 पेयर्स आ गए। 2 स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का पेयर आया है हमारे पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का पेयर आ गया हमारे पास 13। तो अब हमने ये जो सारे स्क्वायर्स थे, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, वी हैव लर्नड इट सो डीपली इन D1 मैथ्स के कैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर्स को कैंसिल करते हैं और क्यों स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी विल गेट 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13। तो क्या होगा? 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 टाइम्स 2 इज 16,
Multiply by 3 times 3 is 9, 3 times 1 is 3. So finally you need to multiply 16 times 39. So what will you get? 624. So बच्चों, with the help of prime factorization, जो कि that you have learned in D1 math, we have find out the square root of this big number, and that is 624. Now, because we are doing D3 math, so we have to learn a new method to find the square root of the same number. So ये एक क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से करूंगी, so that you can identify the difference. The answers will be same, but there is a different method that we have to learn this time. Okay. So now we have to find the square root of the same number with a different in a new method. Let's do this one. Okay. तो बच्चों ये मेथड आपके लिए न्यू होगा. You have to understand it in a good way. 3, 8, 9, 3, 7. First step is we are going to make the pairs starting from like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is right to left. You need to make the pairs right to left. 1, 2, 3, 4, 5. तो टू नंबर्स के हमने पेयर्स बना लेने हैं. अब हमने सबसे पहले वी आर जस्ट गोइंग टू कंसीडर द फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर को अगर हम कंसीडर करेंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 38. सो हमने कोई ऐसा टेबल सोचना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 38 और लेस देन 38. सो वी नो 6 टाइम्स 6 इज 36. तो वी नो 6 टाइम्स 6 इज 36. सो अब आगे हमारा स्टेप डिवीजन का जो होता है वो वही है. 38 माइनस 36 इज 2. और यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, जो डिजिट यहाँ पे आपका लिखा होगा आपने वही डिजिट यहाँ पे लिख के उसको ऐड कर देना. तो 6 + 6 इज 12. बच्चों ये वाला स्टेप आप लोग दोबारा सुन लो और समझ लो. 6 टाइम्स 6 इज 36. यहाँ तक तो समझ आ गई. 38 माइनस 36 इज 2. ये भी समझ आ गई. नाउ यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? 6. तो आपने यहाँ पे 6 दोबारा लिख देना है. Then 6 + 6 is 12. You have to add the same digit. Okay. Okay. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नाउ दिस इज 12. अब 12 के साथ हम कौन सा ऐसा नंबर डाल अप्लाई करें? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया. अब हमने नेक्स्ट पूरे पेयर को नीचे उतारने, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस में पेयर्स चलेंगे. तो यू हैव टू टेक द पेयर्स. अब आपने 12 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं क्योंकि 293 और लेस देन 293. तो हम 1 से शुरू करते हैं. अगर हम 1 लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 तो वी गेट 121. 121 जो कि 293 से बहुत स्मॉल है. तो हम 12 के साथ, यहाँ पे 12 था, 12 के साथ पहले हमने 1 लिखा था. अब 12 के साथ हम 2 लिख के देखते हैं. 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 भी यहाँ पे ही लिखेंगे. 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 1 2. तो 244 इज अ सुटेबल नंबर, क्योंकि 3 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा. तो इसका मतलब हम यहाँ 2 लिख सकते हैं और यहाँ 2 लिख सकते हैं. और 122 टाइम्स 2 हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 244. स्टूडेंट्स आपको समझ आई इसकी? फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 9 आ जाएगा. 8 माइनस 4 4 हो जाएगा. अब यहाँ पे हमारा क्या रूल था? 6 + 6 हमने 12 किया था, याद है? तो लास्ट डिजिट को दोबारा से यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे, बिकॉज हमेशा लास्ट डिजिट को यहाँ पे ऐड करना. तो क्या आ जाएगा? 1 2 2 + 2 4 124 बन जाएगा. यहाँ 49 आ गया और नेक्स्ट पेयर को हम नीचे ले लेंगे, दैट इज 7. तो अब 124 के साथ ऐसा क्या करें that we can get 14976 या उससे छोटा. 124 के आगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 1241 जो कि बहुत स्मॉल हो जाएगा. 124 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमने 124 से आगे कुछ लिखना है, ये बात आपने ख्याल में रखनी है. 124 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना. 124 के आगे कोई एक नंबर लिख के फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2484 आ जाएगा. अभी भी ये 4000 में है, हमारा आंसर 2000 में आ रहा है, विच इज वेरी स्मॉल. तो आई थिंक हम फिर से मूव करते हैं. 124 को 3 से करते हैं. 3 टाइम्स 3 इज 9, 4 टाइम्स 3 इज 12, 3 2 इज 6, 7, 3 1 इज 3. अभी भी ये 3000 में, ये 4000 में है, तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन. 124 को 4 4 से करते हैं. 4 times 4 is 16, 4 times 4 is 16, 17, 4 2 is 8, 1 9 4. So 4976 exact answer हमें मिल गया. This means we have to write 4 over here and 4 over here and we get 4976, which is our square root. तो अब हमारा स्क्वायर रूट क्या आया? 624. तो रिमेंबर जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था तो क्या स्क्वायर रूट आया था? 624. Yes, students. Daniel and Alia, can you understand this? Yes. Yes. दोनों को समझ आ गई सही तरीके से हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट विद दिस मेथड? हाँ जी. ओके. तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव ऑन करेंगे. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ? अब मैं आपके साथ एक डेसिमल नंबर का
Okay, next question is find the square root of 126.1129. So now this is a decimal number. अब हम इसको किस तरह से करेंगे? So we have 126.1129. Okay. तो अब इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले तो बनाने पेयर्स, राइट टू लेफ्ट। तो ये वन जो है इसका ये अकेला ही बच गया, तो इसको हम अकेला ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम एक लंबी सी लाइन लगा देते हैं, 1 टाइम्स 1 इज 1। तो ये हमारा 1 2 का तो मसला हल हो गया। अब हमें पता है कि हमने यहाँ साइड पे क्या करना होता है कि जो डिजिट यहाँ होते हैं वही यहाँ लिख के उसको ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। और यहाँ 1 - 1 0 है, तो ऊपर से नेक्स्ट पेयर को हम नीचे उतार लेंगे तो 26 आ जाएगा। अब 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 26 या उससे कम नंबर आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बड़ा फर्क कर रहे हैं। 2 के साथ अगर मैं 1 लिख के देखूं, आपको पता है उसके साथ लिखते हैं, उसके साथ मल्टी, तो 1 × 1 21 आ जाएगा। तो यहाँ 26 है तो 21 सूट्स में, इसका मतलब मैं यहाँ 1 लिखती हूँ, यहाँ 1 लिखती हूँ, आई विल गेट 21। तो आंसर वुड बी 6 - 1 इज 5। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो 1 लिखा है इसको दोबारा, जो लास्ट डिजिट होता है उसको दोबारा लिख के ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 1 + 1 2 22 बन जाएगा। यहाँ पे 6.5 आ गया, तो जो नेक्स्ट पेयर होता है उसको हम नीचे ले आते हैं, तो ये 5 11 हो गया। अब 22 के साथ ऐसा क्या लिखें कि उसको मल्टीप्लाई करें तो yes, यस ओके। तो हम 5 11 पे पहुंचे थे, तो 22 हमारे पास एक नंबर आ गया और हमने ऐसा नंबर सोचते हैं जो 5 11 है उससे छोटा था, तो लेट 2 विद 2। तो 2 से करेंगे तो विल गेट 4 4 एंड 4, सो आई थिंक 444 इज द बेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, सो आई विल गेट 444 ओवर हियर। तो नाउ आई नीड टू, क्या करना है मुझे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 5 11 - 444 क्या होगा, 67। 67 और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आना है 29। ये मसला हल हो गया। यहाँ पे मुझे इसी नंबर को दोबारा से लिख के ऐड कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा इस तरह। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मेरे 2 2 4 के साथ कोई ऐसा नंबर ढूंढें जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 7 2 9 आ जाए। तो बच्चों मैं डायरेक्टली 3 के ऊपर चलती हूँ। आप पहले 1 करें, फिर 2 करें, फिर 3 कर सकते हैं। 3 3 9, 4 3 12, 3 2 6 7, 3 2 6। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर 6 7 2 9 आ गया। तो इट मीन्स वी नीड टू राइट 3 हियर एंड 3 हियर, 6 7 2 9। तो मैंने आपको पहले भी करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इफ यू सॉल्व इट तो यू विल स्टिल गेट ओके। तो यहाँ पे जब 26 को वी गेट ओवर हियर एंड वी राइट 26 को वी गेट 2 ओवर हियर, सो वी आल्सो नीड टू पुट द डेसिमल। तो डेसिमल हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे। जब हम 1 से करेंगे यहाँ तक, लाइक डेसिमल से पहले वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक था ना, 21 ones are 21. So after that there is a decimal, so we need to put decimal and then we can carry on. So the answer will be 11.23 in the same way. Got it? So अगर आप इसको, if you do it with the prime factorization, even then you will get the same answer. It is 1 1.23. So बच्चों, if you have any confusion in this question, just ask me because I'm going to do one question of each type. नो I have a question. Yes, yes. Have to take the other two decimals down as we add the last digit. As we had the last digit, 1 + 1 is 2. As we did 21 times, 1 is, यहाँ पे भी we write 1 and we get 21. Now we are going to take out 11 down. When we are going to take out 11 down, before writing 11 down, we need to put decimal. So we will put decimal over here. Then we will take 11 down. Yes, next question. What is your Okay. question, Alia? Got it? Yes. We will do more questions of decimal questions, inshallah. Okay, now we have this question, find the square root of 0.36. So there is another way that you can just finish the decimal and then you can write it with the help of prime factors. So square root, finding square root means you need to put the sign of square root. Then what you're going to do, square root of 36 by 100. Because if you take out the decimal, you will write 100. Do you know how did we write 100 over here? Yes. 0.36. If we finish decimal, we get 1. 2 numbers after decimal, so 2 zeros. So we get 36 by 100. Now we can write the prime factorization of 36.
3 times 1 is 3, 2 is 6, 2 times 6 is 12, 2 times 3 is 6, 3 times 1 is 3. So what we get? 3 times 2 times 2 times 3 by, we can write the prime factorization of 100. 2 times 5 is 10, 0, 2 times 2 is 4, 5 is 10, 5, 5, 25, 5, 1, 5. So you get 2, 2, 5, 5. So in square roots, you need pairs, 3 square, 2 square, 2 square, 5 square. So you can also cancel out square roots and everything. So what you will get is 3 by 5. So if Sorry. there's one or more same, we 3 have to square, cut them from both sides. 2 square, sorry, wait. So you just cancel out the square roots. This square cancel with the square root, this square cancels with the square root. So you get 6 by 10, or you can write it as 6 by 10, 0.6. Got it? Got it. We can do one more question for the decimals now. Okay, that is 27.6676. Okay, I am just giving you 2 minutes. If you can try this question yourself, and then I will do it on the screen. Done?
Yes, students, what did you get? आधा हो गया है। Not done yet. Okay, what did you get? Yes, Alia, what did you get? I said I'm not done. Try to be a bit little fast. Yes, done, bachcho. So it should be 5 times 5 is 25. So if it is 5 times 5 is 25, you will get remainder 2 decimal. So you will take 66. So 5 plus 5. 5 plus 5 is 10. Now you have to think of a number which you will write with 10. So you can get 266 or less than that. So if you can write 2, you will get 2 times 2 is 402,204. So I can write 2 here and 2 here. I will get 204. So 6 minus 4 is 2, 6. So from above, I will find out 76 here. So here I will add 2. So I will get 104. Now I have to write some number over here after 104. Maybe I can write 3. 3 times 3 is 9. 4 times 3 is 12. 3129. But this is 6,000. This is 3,000. So it's very less. So we need to move above. We can do with 6. 6 times 6 is 36. So we get 6276. So if I write 6 here and 6 here, I will get 6276, which is my answer. So the square root would be 5.26. Okay. So this is we are done with the square root questions. Now tell me one thing. What is cubes and cube roots? So tell me one thing. If I have 0 times 0 times 0, I can write it as 0 cube. If I have 1 times 1 times 1, I can write it as 1 cube. If I have 2 times 2 times 2, I can write it as 2 cube. Now, what is 1 cube? It is 1. Cube root of 1 is 1. Cube root of 2 cube is 8. So, cube root of 8 is 2. So, this is cubes and cube roots are inverses of one another. If I have 3 times 3 times 3, what is this? 3 cube, which is equal to 27. And cube root of 27 is 3 again. So, this is what cubes and cube numbers are. So, these are all perfect cubes. What are these? Perfect cubes. Perfect cubes are those cubes which are the perfect numbers and there are no decimals or no fractions. These are the perfect whole numbers that are called perfect cubes. So now we can also do find the cubes of the following numbers. For example, you have to find the cube of the number 52. 52 cube. So what is the cube of 52? 52 times 52 times 52, which will be equal to 140608. If you have to find the cube root of a number, for example, find cube root. Finding cube root is same as we find square root using prime factorization. So you have the number 729 and you need to find the cube root. So how to find the cube root? 729. Start the prime factorization We process. will use prime factorization. Yes. 3 times 2 is 6. 3 times 4 is 12. 3 is 9. 8 is 24. 1 is 3. 7 is 21.
9 is 27, 3 is 9, 1 is 3. So it means in the cube roots, we have to take the three, we're not going to take pairs, we're going to take three numbers together, like this. So what we will get? Cube, 3 cube times 3 cube. So what we will get? We will cancel 3 cube and 3 cube. We will get 3 into 3, which is equal to 9. So 9 is the cube root of 729. It means if you multiply 9 times 9 times 9, you will again get 729. So 9 cube is 729. So cube root of 729 is 9. Got it? Now if we have a big number like this, find the cube root of 10648. So again, how we are going to find the cube root of this number? We'll still do the prime factorization. Okay, you people are going to do the prime factorization and tell me the cube root. I'm giving you 1 minute. Done, students? So if you will follow the prime factorization, the cube root of this number you will get is 22. 22. I'm done. 22 है. Very good. Very good. 22. Okay. Okay, good. Now, students, what you have to follow at home is open the chapter number 1. We have learned about real numbers, about types of decimals, and about a lot of things, properties of real numbers. So try to read all of these things. Okay. Start reading from first page of chapter 1 and start reading a few pages of chapter 1. Okay. Then also try to do all of the examples and all of the practice now on your own. These things are the self-study things. Okay. These are the things that I'm telling you that you have to do on the basis of self-study. So you have to read out all of the pages, just do the reading, understand the things, do the examples on your own, do the practice now questions on your own. These are all things that we have to do on the self-study based questions. And inshallah, by tomorrow, we will start our first exercise and we will follow the exercise questions by tomorrow. Okay? Take care. Okay. Allah Hafiz. Take care. Best wishes.